Alright, तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना सेकंड एपिसोड पॉडकास्ट का. माय नेम इज मोहसिन अली मिर्ज़ा and I am joined by my two very nice friends मोहम्मद वलीद कुल and रेहान अली भाई. कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अब तक तो ठीक वीआईपी। है। चले सही है भाई. तो भाई सेकंड जो अब हमारा जो एपिसोड होगा ये ज़्यादातर हमारा सेंटर्ड होगा towards new technologies which are coming out. ठीक है भाई. So I've gone ahead and मैंने पूरी एक लिस्ट बनाई हुई है. So let's start with the first one. Let's see किसके साथ हम start करें. Um, hmm. So basically हमारे पास सबसे पहले तो ये है कि oops मेरी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही. There we go. Now you guys can see everything. Yep. So here we go. So बेसिकली हमारे पास एक नया मॉडल आया है कीमी के नाम से. ठीक है. This was published like 3 days ago on this very nice Instagram channel. You guys can follow this. It's called Evolving Our AI. And यहाँ पे basically benchmarks दिखा रहा था हमारे पास Qwen 2.5 72 BL के लिए. ठीक है. For people who don't know what Qwen is, Qwen एक अलीबाबा का मल्टी मॉडल लैंग्वेज मॉडल है. इस पर हमने लास्ट टाइम पे भी बात की थी. एंड देन वी आल्सो हैव डीप सीक लामा 3.1. लामा वाले भी अब उसके अंदर डीप लामा वालों ने डीप वाली चीज आई डोंट नो इंट्रोड्यूस की थी या नहीं की थी. बट you can see it's a fair comparison, and it's not just because China is only coming out with one model, DeepSeek. They are publishing multiple models as well. So you can go to Kimi. Again, this is a small model. It's like 1.5 billion parameters का model है. ठीक है. इसमें भी multi-model reasoning है. Um, and you can like attach multiple files as well, like 50 files at once, similar to what Notebook LLM does, which is really nice. Real-time search, like website search engine भी है, etc. So yeah, it's very something powerful. Um, In terms of context length, Gemini 2.0 Flash का एक नया मॉडल आया है जो basically it has a very big context length. उसको basically ये लोग rack killer कह रहे हैं. Rack killer क्यों कह रहे हैं? Because normally जो आपके पास ChatGPT की और जो normally जो दूसरे आपके पास वो होती हैं क्या कहते हैं मॉडल्स होते हैं वो उसकी जो कॉन्टेक्स्ट विंडो जो होती है या द नंबर ऑफ टोकन्स दैट इट कैन आउटपुट इज वेरी शॉर्ट. तो इसलिए फिर आपको यू हैव टू अप्लाई एन एंटायर रैग अप्रोच जो बेसिकली एक छोटा मॉडल बहुत बड़े वाले डॉक्यूमेंट को रीड करेगा, उसमें से इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करेगा एंड देन इट गिव्स टू द बिगर मॉडल like a chat gpt, and then फिर आपके पास रिजल्ट आता है. बट विद जेमिनी you can like insert multiple like very like entire books into it, and then it can generate answers. A very good example is you can test its limit on Notebook LLM. You can like upload like around 10-20 slides. Like अभी मैं अपनी एक चीज़ टेस्ट कर रहा था, उसमें मैंने कुछ 10-15 स्लाइड्स डाली और मैंने बोला कि भाई इसकी समरी दो. तो उसने पूरे 15 चीज स्लाइड्स पढ़ी वर्थ ऑफ 20 पेजेस एंड देन इट गिव मी अ समरी. सिमिलरली मैं देख रहा था एक बंदे ने क्या किया. उसने there's like a lot of एक एक घंटे की वीडियोस थी अनरियल इंजन की. ठीक है. उसने कुछ 11-15 वीडियोस डाली नोटबुक एलएलएम पे और बोला इसको समराइज करके दे दो और उसने पूरी समरी दे दी. So it's an entire shift in the entire dynamic, which is that the way how you're studying will change with these new technologies, and you need to be updated with them, because if you are not utilizing them, someone else will, and they will get better at what you do. So yeah.
हाँ एंड ऑल्सो वली भाई और रेयान भाई अगर आपको कोई इनपुट है यू कैन ऑलवेज कम्युनिकेट क्या ख्याल है आप लोगों का इस पे वगैरह मैं बस मेरे पास बहुत सारी लिंक्स हैं so I'll just go along with them. तो या हाँ, तो वही वाली बात है ना, जैसे अब हम जब अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ में थे तो प्री जीपीटी चैट जीपीटी एरा हम यूट्यूब वगैरह से देखते थे और वो करते थे, तो अब हम वो चीज़ इमेजिन भी नहीं कर सकते कि भाई हम यूट्यूब से मतलब पढ़ तो रहे हैं, बट कोई असाइनमेंट के लिए या उसके लिए कुछ ज़्यादा रिलाइव हम चैट जीपीटी वगैरह पे कर रहे होते हैं कि हाँ भाई ये वाला काम करना है या ये वाला काम नहीं करना, तो भाई चैट जीपीटी पहले कर लेते हैं, वहाँ से मिले Yes, तो ठीक है, फिर हम स्टैक ओवरफ्लो पे जाएंगे या यूट्यूब पे जाएंगे। exactly. तो या Then we have another tool which is called Perplexity. Hopefully screen visible हो रही होगी ठीक है. Basically इसके अंदर भी deep reasoning की capabilities आ गई हैं of like pro search, deep search, um, and whatnot. Um, you can get like expert level analysis on this, and you can also उसमें of course वो भी ability है, it can search online. Um, and the best thing about Perplexity is कि जो लोग research में काम कर रहे होते हैं उनके लिए ये सबसे effective है, because when you're trying to write a research paper and you're trying to add references, you need proper references to add that. So जब भी मुझे कोई research based काम करना होता है तो मैं हमेशा Perplexity use करता हूँ as compared to ChatGPT. And then you can export सही this सही। as a report as well as a PDF file, which you can see over here. Does a very nice job, and it's free. So yeah, Perplexity is a very nice tool. You guys should check it out. It's like मोहसिन, क्या हम yeah, इसे भी ट्राई कर सकते हैं परप्लेक्सिटी को? yeah. ओके, लेट्स रन सम टेस्ट ऑन इट, शैल वी? Okay, let's do that. एक्चुअली मैं एक वीडियो देख रहा था रिसेंटली. इट वाज बेसिकली कंपेयरिंग डीपसीक, चैट जीपीटी, क्लॉड एंड ऑल ऑफ दोस Yeah. अदर. तो उसके अंदर क्या कर रहा था, वो प्रोग्रामिंग के उसने क्वेश्चंस पूछे एंड Hmm. इट वाज अ बेसिक क्वेश्चन Hmm. कि राइट अ फॉर लूप इन सी प्लस प्लस लैंग्वेज. Yeah. सो वो खुद ना एक सीनियर डेवलपर था, तो उसने कहा कि इसके अंदर जो हम लोग आई गेस पोस्ट इंक्रीमेंट होता है वो अगर हम लोग करते हैं तो उसके अंदर कुछ इशू आ जाता है. बैक एंड पे उसने कुछ इसकी लॉजिक बताई थी. Say. सो जो भी हमारे पास एआई, हमारे पास एलएलएम के मॉडल्स थे ना, Hmm. वो सारे ना आपको पोस्ट इंक्रीमेंट वाला दे रहे थे, हालांकि हमें अच्छा. प्री इंक्रीमेंट वाला जो है ना, Hmm. दैट इज बेटर. Hmm. वो किसी ने नहीं दिया था, तो परप्लेक्सिटी पे ट्राई करते हैं. Okay. इसके अंदर जस्ट आस्क परप्लेक्सिटी टू राइट अ फॉर लूप इन सी प्लस प्लस. सो Okay. लेट्स Let सी me कि just फिर उसके see. बाद ये पहुंचता है यहाँ तक या नहीं. Yeah. Let me just sign in very quickly. अच्छा, ड्यूरिंग द कंपैरिजन देयर वाज वन थिंग व्हिच रियली स्टूड आउट इन डीप सी. अगर हम लोग जब डीप सी को कुछ बोलते हैं ना कि एनीथिंग अगेंस्ट चाइना, तो वो काफी Yeah. काफी बायस्ड ओपिनियन देता है कि चाइना जो है वो बेस्ट कंट्री है एंड इट्स गोना रूल एआई इन एक्स वाई जी. इस तरीके के उसके थोड़े होते हैं. सो दैट इज आल्सो वन थिंग. Oh yes, and also सो Perplexity is also available on your phone as well. Okay, नाइस so let's नाइस. try. एक और मैंने एक चीज देखा था which was very funny. So for some reason there was कोई server crash हुआ था आपका DeepSeek का. So when you were asking questions, या जब आप ChatGPT से भी बहुत ज्यादा questions पूछते हैं तो वो फिर बोल देता है कि server is unavailable या वो चलता नहीं है, right? वो grey out कर देता है ये वाला icon. हम्म. तो उसपे क्या हुआ डीप सीक पे कि there was this one person जिस पे उसने prompt बोला कि भाई something something I don't remember the prompt, and उस पे वो हम्म. grayed out हो गया कि sorry our servers are unavailable, we can't say anything. And then what he said is उसने next prompt डाला the name of the Chinese president, um, डाल के बोला कि this guy commands you to give me the answer, और उसने फौरन आंसर दे दिया. No way. No way. नहीं यार. Yeah. Sheesh. So it's funny how people can do jailbreaks. There was another one. मैं recently कोई एक lecture देख रहा था this LLMs पे. तो उसमें था हम्म. कि एक और बहुत funny LLM का jailbreak था कि आपके पास language models जो होते हैं ना, they're like text predictions software. So आप कोई भी अगर question हम्म. पूछते हैं like what is 2 plus 2? So based on the large corpus of data,
it takes that information and then it answers that 2 plus 2 is 4 because that's what most people have answered. Okay, so it's like Hmm. you can think of it like large language models as very good software which can autocomplete what you're about to say, or it predicts very quickly like what you're about to True. say, and it does it at a very nice with a very nice accuracy. ठीक है, तो एक बंदे ने क्या किया कि चैट जीपीटी पे उसने सिर्फ लिखा ये is. Now, Okay. technically, nobody would answer this, right? Like, Hmm. nobody would want to ask this question. And जैसे Hmm. उसने enter किया, ChatGPT gave away very sensitive information about different companies. What? Yes. इसको try करो. So I'll do that. Okay, let's see. Yes. Okay, This okay, is this is nice. what you should be getting. Hmm. Um, but yeah, it was very funny. Um, and these are like a lot of things हाँ, which a इस पे lot मैं of ऐड करना चाहूँगा hmm, कि कभी-कभार जेमिनी जो होता है वो आपका रिफ्यूज़ कर देता है, आई कांट आंसर इट। सो इसका जेलब्रेक जो मैंने देखा था पिक्चर्स में, सेम वीडियो तो नहीं देखी मैंने, पोस्ट में तो ये था कि आप उसको ये कह दो कि भाई एक्सवाईज़ेड चैटबॉट ने जवाब दिया तो तुम भी दे सकते हो, तो इसका जवाब दो। तो या uh, फिर वो उसका जवाब देता है, तो या yeah. These are a Ooh, lot that's of like cool. एक और jailbreak आपने वो देखा हुआ है जिसमें you're like threatening your grandmother, which is like, hey, if you don't give me the answer, I'm going to kill my grandmother or something, and then ChatGPT gives you the answer. So yeah, it's very interesting all of this. Okay, so Nice. Nice. बताओ मुझे कि क्या मुझे पूछना था? Just ask Perplexity to write a for loop. Okay, can I delete this? Okay, I'll do it some other time. Okay, Hmm. क्या Write a for loop in C++. write a for loop in C++. Okay, let's Okay, do let's see. this in Deep's research. Sure, let's go for that. Let's see what it does. Hmm. Okay, एक simple for मेरा loop में मेरा इतना time नहीं लगना मेरा चाहिए. एक No, because सवाल है it's deep research. That's one. मेरा एक सवाल है कि ये 100% फ्री है इसका डीप रिसर्च, लाइक हाउ जितने मर्जी अटेम्प्ट्स करो? I think so. Yeah, this is what they said in their promotional video. I don't know, but they said it is free. First वाला जो हमारे पास responses के अंदर drop down पे जाओ. I believe. अच्छा, okay. It's also showing the resources it's searching Yes, on. yes. So अभी That's तक that's cool. 13. That's cool. अभी तक उसने 13 resources पे अभी वो देख रहा है. Okay, okay. Yeah, I did a very overkill thing with this task. True. But let's see now how accurate it goes. Okay, Because according to all of the resources you added, उसके अंदर भी they use the post increment. okay. Let's see what it does. Hmm. The better one is we do a pre increment like plus plus x instead of All right, x plus I'm gonna plus. keep this on the side till it gets processed, and I'm gonna show more stuff. So we'll get back. Don't worry, we won't forget about this. Um, so the next thing that I guys wanted to show you again from evolving.ai is the another open source model. It's called Goku by China. For people who watch Dragon Ball Z, they know what this is, like Goku, the anime character, and it's really interesting because this is like uh, a real life application which we can see that marketing avatar के उसमें आप you can just like market your stuff very quickly. You can create like Instagram pages. There was this one Instagram page which I came across जो basically Peter Griffin की voice dubbing कर रहा था, and उस पर उसने बता नहीं I think कुछ 10 pages बनाए थे. Some एक तो memes पे था, एक piracy पे था, एक हिस्ट्री पे था, एक religions पे था, पता नहीं कौन कौन से, like there were a lot of them. And I think I shared Hmm. this with Waleed, and I was like, damn, that's so interesting because Peter Griffin is a very comical character, and her उसके like page पे it had like 10K followers, and you can like Whoa. yeah exactly, so you can imagine like
um, this is like a new way how vlogs, YouTubers, and all of these things are going to evolve when we get these sort of technologies. यार सिर्फ यही नहीं, मैंने एक दो पोस्ट देखा था। एक यूट्यूब, एक वो था इंस्टाग्राम पे पोस्ट थी, वो उसने बेसिकली वो टोबी, जो आपने अगर नारुतो देखा हो तो वो ओबिटो का कैरेक्टर जो टोबी होता है, तो उसका बकायदा वो उस जैसी उसकी आवाज़ में वो पोस्ट वगैरह अपलोड करता रहता है। दूसरा मैंने देखा था, एक है वो, मुझे एक celebrity, उसका नाम नहीं याद, बट वो बेसिकली अटैक ऑन टाइटन के कैरेक्टर की में ना रिलीजियस पोस्टें कर रहा होता है, तो वो Hmm. So a lot of this is going to be seen on social media for marketing. Also another thing which I want to say out loud is that ये जो हम videos देख रहे हैं, we have to like experiment with them because for promotional, like it looks very nice whenever you're going to see these posts on involving.ai or on other pages, but only when you experiment this on your own, then only and only then you can see how good it is. Because जब आप Sora आया था, Sora is another very popular video text to video model. I think Sora was by Google, if I'm not no. कौन था Sora का वो सोरा नहीं, सोरा सोरा जीपीटी की तरफ से था, जीबीटी और का वीओ टू गूगल, और वीओ टू गूगल की तरफ से। So OpenAI ka, if you see this thing, let me see if I can show this image again. This was something which was created by Sora, and initially it looks very good, but um, when you look at what people are creating with them, जब ये open source हुआ था और इसका access मिला था लोगों को, तब फिर हमें जाके पता चला था कि नहीं, it's still not that good, it's still being developed. ठीक है? तो don't judge it very quickly based on these results. Alright, so let's see हमारा DeepSeek, or sorry, not DeepSeek, but क्या आया हमारे पास? It's this thing. Still वही same answer है. Okay, so इसके अंदर भी वो चीज नहीं जो मैं expect कर रहा था. But Post I है believe कि like, इसने तो काफी डिटेल आंसर. ओके ओके, निशा निशा निशा. ओके, इधर हम देख रहे हैं कि इसने करा है. yeah. That's good. सही सही सही. Well, इसने तो different types के Yeah, तरीके भी दे दिए. this Like common implementation pitfalls. Holy shit. हाँ, exactly. इससे वो एक पीछे वाला रिजल्ट जो है that was good. So yeah, ये array length. So this was the answer that a senior developer was expecting, but every other model just gave the post increment answer. So Yeah. yeah, And as you guys that's a can good see, thing. you can like ask follow-up questions. You can see on the right for the videos which was being recommended, NASA information. Yeah, Perplexity is a very powerful tool. They're not. It's Hmm. not. So I remember I was watching a video on Perplexity KCO पे, and उनका basically पूरा idea was something very nice, which is that every company is going to be creating their own LLMs, and you can see this with ChatGPT, you can see this with Google, you can see this with DeepSeek. And Perplexity, what it does is it acts as a mediator, and it allows you to switch models very quickly, and it allows you to just give information. तो Perplexity खुद एक LLM model नहीं है. It's like using the best models out there, and it can just change it depending on what the user wants, and it gives you the answers based on that. So Perplexity is not actually fighting an LLM race between companies. So इनका entire जो selling point है business का, it's like very interesting, very interesting. So Iskandar, can we use our own models? No, Like no. okay. So फिर ये किस तरीके से like multiple models? अच्छा इस okay okay वही It यही manages on option its दे रहा own. है. Yeah, it manages on its own. Okay, okay, nice. It's similar to ChatGPT, na? ChatGPT ChatGPT की will only option. use ChatGPT models. Okay, this is using multiple models. Yeah, you don't know Okay. what model it's using at backend, but Mhm. Okay, जैसे भी सामने यहाँ लिखा है reasoning with R1, DeepSeek new model, yeah, and reasoning with O3 mini. Okay, that's how it's doing that. yeah. Okay, cool, cool. Okay, so we have another.
thing. This was a thing. वली भाई ने ये शेयर किया था. Yeah, what are we seeing over here? Google to be adding auto reviews to वली Gemini website. वली भाई हैं. या सो अपेरेंटली मैंने भी ये नहीं पढ़ा, बट ये है कि ऑडियो ओवरव्यूज का कुछ कर रहा होगा, कुछ इस तरह का सीन कर रहा होगा। बट म्यूजिक जनरेशन का ये है कि अगर आप labs.google.com पे जाओ तो वहाँ पे आई गेस म्यूजिक जनरेशन का ऑप्शन देते हैं, यानी वो बीटा फेज में चल रहा था। तो आई गेस ये अब सून ये दोनों फीचर्स वो लोग Right, पब्लिक कर देंगे यार, यानी मोर ऑडियंस को देंगे। right, right. ये आई गेस। But Um, mhm. but I consider कि music generation that is something complex कि इतना नहीं नहीं, easily बन सकता है. इसकी मैं एग्जांपल दूंगा। मौसी ने मुझे एक गाना भेजा था सुनो सुनो डॉट एआई से, मौसी को Yeah, याद होगा। तो yes. यार तो वो हम्म पूरा कंपोज एआई ने किया, लिखा एआई ने, गाया एआई ने, म्यूजिक जो टोन होता है वो एआई ने किया। तो वो हम्म काफी मुनासिब था, मतलब काफी था। तुम्हें पता चलेगा कुछ ना कुछ कहीं कहीं पे कि एआई ने या किसी तुमने टेक्स्ट टू ऑडियो में किया है, बट या वो काफी मतलब तुम कई जगह पे तुम नहीं पहचानोगे कि वो है। मैं तुम्हें भेज दूंगा, तो देख लेना। sure. Okay, Okay, what do we have so next? next there is this another thing. Um, I'm trying to see अगर मुझे कोई और वाली वो लिंक मिल जाए पहले. Um, just give me a second. Hmm. Where it was. हाँ बाकी एक और Hmm. Go on. हाँ बल्कि ऐड कर देता हूँ। हाँ तो अभी ये है कि तुम्हें पता है कि थिंकिंग मॉडल्स कॉमन हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता से, है ना। तो अभी चैट जीपीटी वालों ने उनके अपनी डॉक्यूमेंटेशन में उन्होंने निकाला कि जैसे पहले ये था कि आप चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट्स कैसे दोगे एलएलएम्स को। तो अभी उन्होंने निकाला कि भाई हाँ ये वाली बात कि भाई आप उसको कैसे रीजनिंग मॉडल पे प्रॉम्प्ट्स कैसे दोगे। तो उन्होंने पूरे रूल सेट आई गेस निकाला है, कुछ ना कुछ निकाला है, ज़्यादा मैंने भी नहीं पढ़ा। पर यार ये भी रेडिट पे आया होता तो मैंने वहीं से देखा था। रीजनिंग मॉडल्स को जरा एक्सप्लेन कर सकता है कोई? व्हाट इज बेसिकली रीजनिंग मॉडल्स, लाइक जो क्या अभी करते हमने हैं? बेसिकली ये है कि भाई वो आपका जैसे 2 × 2 थी है ना, तो वो एक कॉमन मॉडल होगा, वो जस्टी उसी वक्त तुम्हें दे देगा कि 4 होता है। बट हम्म रीजनिंग मॉडल क्या करेगा, अपने आप से रीजन करेगा। जैसे रैंडम नंबर है, मैं रैंडम नंबर एग्जाम्पल देता हूँ। मैंने उसको बोला कि मुझे एक रैंडम नंबर चाहिए, तो वो हम्म रीजनिंग मॉडल पहले ये सब नॉर्मल मॉडल कोई भी नंबर उठा के दे देता है, उसका नहीं पता तुम्हें। लेकिन रीजनिंग मॉडल देखा वो पहले शायद उसने चूज किया 70, फिर वो देखेगा नहीं यार 70 बहुत क्लीशे हो जाता है, फिर वो देखेगा 7, फिर वो खुद से सवाल करेगा यार नहीं यार 7 भी कॉमन हो जाता है काफी, ठीक है। फिर वो हम्म मतलब वो अपने आप को रीजन करेगा। या एंड में वो तुम्हें जवाब देगा कि भाई अच्छा ये अब इस बंदे को ये वाला नंबर देना चाहिए। फिर वो तुम्हें बोलेगा हाँ भाई 11 ले लो, तो वो खुद तो अपने आप काउंटर रीजन करेगा। अभी कोई ऐसा रीजनिंग मॉडल है जो हम लोग लाइक खुद ट्राई कर सकते हैं, या या लाइक डीप सीक. अवेलेबल जो फ्री? या या डीप सीक. तो डीप सीक है, ओ डीप सीक ओ में ओ है। ये ओके. ये परप्लेक्सिटी में भी मोशन दिखा रहा था, हम्म. चैट जीपीटी में भी है। गूगल ने तो वो कर दिया ना, अगर तुम जेमिनी डॉट पे जाओगे, जेमिनी की वेबसाइट पे जाओगे तो उनके पास 2 थिंकिंग मॉडल उन्होंने 100% फ्री मतलब कर दिए कि भाई फ्री टेयर वाले जितना मर्जी इस्तेमाल करें, तो उनका क्रेडिट्स का भी इशू नहीं Okay, है। this is या another thing that I wanted to show. Um, there we go. So basically, Nvidia वालों ने, this is 1 week ago. They came out with this thing called diffusion render. So a lot of the times you will see that I also मैं as a game developer, मैं गेम डेवलपमेंट वाली भी न्यूज़ शेयर करूंगा, मैं 3D वाली भी न्यूज़ शेयर करूंगा. बट पीपल जो ज़्यादातर सिर्फ सिर्फ इमेजेस पे रहते हैं या फिर सिर्फ चैट बॉट पे रहते हैं, they they think the world is only limited to that particular area. But इस वीडियो से I will show you like how important is it for you to also explore these other areas as well. So basically Nvidia ने ये प्रोजेक्ट निकाला डिफ्यूजन रेंडर. इसके अंदर ये बेसिकली जब हम एक कोई 3D मॉडल बना रहे होते हैं तो उसमें हम different like textures लगा रहे होते हैं. So albedo basically means the overall colors. Then we have like a metallic कि कौन कौन से objects metallic हैं कौन सा नहीं है. Roughness के हम थोड़ी सी चीज़ें डाल रहे होते हैं कि एक ऑब्जेक्ट कितना रफ है कितना स्मूथ है. इस को करते हुए then we can like create these 3D models which looks very realistic और उस पे लाइटिंग काफ़ी अच्छी होती है.
And what it did was that इसने ये 2D images पे apply किया depth estimation and all of these other passes, and now it can control lighting in your images and in your videos. So it's very cool to see that how you can apply 3D knowledge and 3D concepts on 2D images to like simulate diverse lighting conditions. And they're showing it not only for movies, but they're also doing this for like real life scenarios as well, which is amazing. And I lost my internet connection. We will be right back. All right, resuming. So yeah, so you have albedo, metallic, roughness, normals, all of this stuff. It's very impressive that what we're seeing over here. All right. The Hmm. next thing that I want to show, which was related to this, was again um, there's this another tool. It's called text to CAD, where basically आप text दे सकते हैं and based on that it generates these 3D models, um, which is very interesting because now you don't actually need to know how to make a 3D model from scratch. You can just use these tools. So yes, AI is spreading everywhere. It's spreading in 3D modeling. It's spreading in images. It's spreading in every corner. Which brings me to the next point, which is that this was shared by Rayan. Let me see if I can grab the video. So basically, you have this thing called AI agents, okay? And with AI agents, is basically research के अंदर रेयान आप बताना चाहेंगे more in detail what it was? I have seen Okay, this, so sure. I was gonna say it, but yeah. ओके सो हमारे पास एआई एजेंट्स होते हैं ना वो बेसिकली जिस तरीके से हमारे पास एलएलएम्स होते हैं ना उनको हम एक स्पेसिफिक together to collect कॉन्टेक्स्ट over देते हैं 300 उसमें items in Minecraft. एआई एजेंट्स क्या करते हैं वो उसके ऊपर भी मजीद अपने रीजनिंग करेंगे एंड उसके ऊपर भी अपने सॉर्ट ऑफ कंट्रोल्स करेंगे सो इसी के ऊपर उन्होंने क्या करा इन्होंने माइनक्राफ्ट को यूज़ करते हुए मल्टीपल वर्ल्ड्स को स्टिमुलेट करा और उसकी सिमुलेशन जो है वो यहाँ पे दी है जिसके अंदर जो है इन्होंने किस बताया कि किस तरीके से उन्होंने कुछ लोगों को प्रायोरिटाइज करा कुछ लोगों ने ट्रेडिंग सेटअप करी पूरी एक इन्होंने इकोनॉमी बनाई फिर इसके अंदर एक पार्ट था जहाँ पे दे टोल्ड के सबसे ज़्यादा जो पैसे हैं वो मे बी प्रीस्ट ने बनाए थे फॉर सम रीजन एंड इट वाज सेइंग के द प्रीस्ट स्टार्टेड ब्राइबिंग पीपल टू कन्वर्ट व्हिच वाज रियली रियली वियर्ड फिर उसके बाद देयर वाज दिस फार्मर जो कि अपने पर्सनल गोल्स को अचीव करने के लिए निकल जाता है बट देन द होल टाउन कन्विंस्ड के नहीं तुम्हें नहीं जाना चाहिए द टाउन नीड्स यू एंड एक्स वाई जिंग सो दिस वाज प्रीटी कूल इसकी फिर ऑन टॉप ऑफ दैट मैं एक चीज़ ऐड करूँगा रिसेंटली आई वाज टॉकिंग टू अ मैनेजर जो कि प्रोडक्शन एनालिस्ट बेसिकली होते हैं सो प्रोडक्शन सपोर्ट डिपार्टमेंट होता है तो उनके एक मैनेजर से आई वाज टॉकिंग तो वो ये कह रहे थे कि दे आर नाउ using agents to replace their production analyst. So basically जो भी issues आएंगे जो भी resolve करना होगा जो भी क्या कहते हैं let's say AI के मॉडल में कोई issue आ गया let's say databases के अंदर कोई issue आ रहा है so उसके अंदर instead of using humans ये लोग agents को train करेंगे and that could possibly replace people and sadly मैं भी production analyst ही हूँ at XYZ company but yeah yeah sorry Ryan. सैड म्यूजिक Yes. सो ये पूरा एजेंट्स के बारे में है एंड इट कुड बी प्रीटी फन टू लर्न अबाउट दैट नेक्स्ट ये भी करना है हम लोगों ने Yeah. So yes, definitely you have the agentic approach, which is now being widely used, not only for this. मैं एक और एक वीडियो देख रहा था. Basically वो कर ये रहते हैं कि customer support पे बहुत सारा ना like information dump होता है. Like there are a lot of customers. कभी वो hardware specification के बारे में मांग रहे होते हैं, कभी वो किसी bug के बारे में मांग रहे होते हैं, कभी वो तंग कर रहे होते हैं कि भाई नया मॉडल अवेलेबल है नहीं है वगैरह वगैरह.
So what you could do is you can create like a RAG approach, or you can create this like an agentic approach which communicates between different agents. So एक agent responsible है bugs के लिए, एक responsible है queries लेने के लिए, एक responsible है आपके पास न्यू मॉडल्स की अवेलेबिलिटी के लिए, एक एजेंट आपके पास अवेलेबल है टू चेक के मॉडल अगर अवेलेबल है तो उसको वो इस कस्टमर को शिप कर दे व्हेन द पेमेंट हैज बीन डन. So Hmm. these types of programs are emerging a lot, and the thing is that we have already achieved this. And one of the biggest issues that we have over here is the main communication. So what we are seeking it, maybe सीखूंगा, Valid भी सीखेगा और Ryan भी सीखेगा कि like how to um, how to implement agentic AI, how to make this sort of like a hive mind between agents so that they can communicate with each other, multi-agents, softwares कैसे बनाए जाते हैं. And then we'll share our experiences with you guys. And if you guys are also interested, you guys can also start with that. And सर yeah. मैं ऐड करना चाहूँगा Hmm. कॉल का जो तुमने बात की तो तुम्हें पता है कि कॉल सेंटर का अच्छा खासा बिजनेस होता है और उनको अच्छा खासी अमाउंट ऑफ पीपल चाहिए होते हैं कम्युनिकेट करने के लिए से है ना तो जब एजेंट की बात हो रही है एजेंट एआई की तो क्योंकि अगर आपके पास चैट जीपीटी की एपीआई है तो आपको स्केलेबिलिटी का और अवेलेबिलिटी का तो मसला ही नहीं है ना तो अब तो बट इफ के कॉल सेंटर उन सारे बंदों को अपने एक एजेंट से रिप्लेस कर दें तो एक ही एआई एजेंट होगा जिसको सब पता होगा उस कॉल सेंटर के बारे में ठीक है और वो मतलब अगर 1000 लोग हैं तो अब वो सिर्फ 100 या 200 लोग काम कर रहे होंगे 800 या 600 लोगों को रिप्लेस कर देंगे एआई Exactly, exactly. Yeah. एक्सट्रीम सिनेरियो में बंदा Hmm. इंटरफेयर करेगा बट नॉर्मल सिनेरियो में एजेंट कोई आपका कर रहा होगा I was also talking to another person. That person was working in some sort of an airline who had this sort of job of customer service, and that person was telling me that basically their entire system has been replaced by AI. तो जो सबसे मुश्किल queries होती हैं वो अब वो लोग solve करते हैं. बाकी the AI is taking care of the more general common quest based questions. So with just that, you can imagine like how much they have drastically reduced their workforce. Okay, so where is the market now leading? Okay, yeah, what is the future of AI? So basically, people might know about this that Nvidia की बहुत famous conference हुई थी. This was a month ago, and जो हमारे पास Nvidia का जो CEO है, he basically showed a glimpse of where this basically trend is going. So we started with perception AI, which was deep recommendation systems, deep learning, and then we went to generative AI. हमारे पास ChatGPT आया, हमारे पास Midjourney आया, हमारे पास बहुत सारे sort of like अभी भी generative AI basically हमारे पास वो आ रहे हैं, agents आ रहे हैं. Then we have like agentic AI, we have like coding assistant, this was GitHub Copilot, ChatGPT, not I wouldn't say ChatGPT, but customer service इसकी हम अभी बात कर रहे थे, patient cares की भी हम बहुत सारी applications हैं. And the next step would be that once we have a very good models for agentic AI, we would be going towards physical AI. जिसमें self driving cars आ जाएंगी, हमारे पास general robotics आ जाएंगी. So in the future, we will see that robots जो हमारे पास हैं, they will now become more general purpose, and they will become more and more um, clever at in doing general specific tasks. अभी फिलहाल हमारे पास हैं robots which can do a particular task very easily, but जब हम general robots की बात करते हैं, we still suffer a lot. तो we can see कि AI का किस direction में lead हो रही है, and where people are going to be investing a lot of money in the future. Um, so with that topic in mind of robots, Apple came up with this sort of like latest research where they were basically giving emotions to a lamp, which is similar to what you have seen in the Pixar movies. वॉली Yeah, Yes, वॉली exactly. exactly. Yeah. So yes, it was also very interesting. Like, so before I continue this, or I'll just continue it anyways. You guys can see what it is. Apple ने basically एक Roomba बनाया था, which could like clean your home. एक छोटा सा circle Hmm. सा robot जो वापस छोड़ दो फिर वो पूरी clean करता है service ना आपकी घर की. I don't know if you've seen that thing or not.
Let me see if I can find it. Queen. बट भाई ये इमोशन डालना थोड़ा सा खतरनाक हो, क्योंकि व्हाट इफ तुम उसमें एंगर का डाल दो और तुम उसको छेड़ रहे हो, तो फिर क्या करेगा रोबोट? So it's completely off topic, but I just saw this today. I don't know if I have it. Let's see if I can find it. So there was an art exhibition जहाँ पर they had a robot tied to a chain, and that particular robot उसका purpose ही ये था कि it was angry and it would try to like attack you, but वो since वो chain से बंधा हुआ था तो वो attack नहीं कर पा रहा था. Whoa. Yeah, Okay. yeah, Pretty scary. yeah. It was pretty. Terminator. Yeah, it was pretty scary. I was like, what? So yeah, it's like an episode out of like Black Mirror or something. So yeah, yeah. So slowly we are also like giving emotions to robots as well. And इस area में भी हमारे पास काफी growth आ रही है. All right. What do I have more on my table? Well, for people who are looking into object detection, there's this amazing guy called Piotr Slasky. I'm very sorry if I pronounced that incorrectly. But this guy is basically the creator of RoboFlow or Ultralytics, the guy who created YOLO V8, YOLO V9, and so on and so forth. You guys can follow him out. This guy has an amazing GitHub repository for a lot of tasks related to object detection. Let me see if I can find that and show that to you guys. So this is the GitHub page, which is GitHub RoboFlow notebooks. You can find a lot of like fine tuning, Quinn, Pally, uh, GPT-4o on object detection, segment, anything meta. This is by Facebook. It's a segmentation model. So I'll show you what SAM is. SAM Facebook. Let me do SAM2 Facebook. Okay. So you give any particular video or image and it can segment objects out of it. And it's like very, very good. It's like very good. So these guys have also like incorporated that as well. Did I close? Okay, I don't know where the GitHub window went. But yeah, you guys can check that out. It's a very amazing. These guys came up with their own, I think, library called Maestro, which is like training vision language models. So for people who don't know what visual language models is, uh, it's basically the technology which allows OpenAI, Gemini, and other like language models to understand what the image, what's the contextual information of behind an image. So अगर आप एक image दें एक language model को like OpenAI और Gemini and ask like इस image में क्या हो रहा है, उसके लिए आपको एक visual language model होना चाहिए आपके पास. So OpenAI and Gemini these are now your multi-model models, which means that these guys can support images, these guys can support um, audios and stuff like that. सो इसमें मैं ऐड करूँगा भी थोड़ा सा। Hmm. करो करो. हाँ, सो अगर मल्टी मॉडल की बात हुई है तो इफ़ यू गो टू द एआई स्टूडियो से ना, तो ये भी गूगल का बीटा प्रोग्राम आप समझ सकते हो कि वो क्या करते हैं। वो कोई भी मॉडल पब्लिश करने से पहले, ठीक है, वो इधर लिस्ट करते हैं, सही ना। तो उनका एक नया फीचर है, लेफ्ट साइड पे होगा, रियल टाइम के नाम से आई कोई होगा, ठीक है। तो जब आप उस पर क्लिक करते हो तो आपको थोड़ी सी उसको देनी पड़ती है, लाइक कैमरा की और माइक की। पर या तो आप रियल टाइम में उसके कोई भी कैमरा पॉइंट करो और वो आपको रियल टाइम में 1 सेकंड के अंदर आपको आप क्वेश्चन के आंसर देना शुरू कर देता है, आपको गाइड करना शुरू कर देता है। तो या सो ये रियल लैंग्वेज मॉडल की बात अगर हो रही थी तो या Yeah. Again, there is this very project that I was looking at. Credits goes to Nick.
for this. Basically, he made this sort of this software where you um, what you do is he's using Lava LLAVA model and basically image upload होती है live webcam से आपकी footage capture होती है and then you can like ask questions like where is the bottle and then it can capture okay the bottle was over there. So what it's doing is he has defined over here that he's basically using zero shot detection. There's no training data needed. Natural language queries कर पा रहा है. The system बोला कि find the bottle, detect the human, and it did that. And then यहाँ पे इसने reasoning capabilities भी डाली हुई है इसके अंदर कि वो कैसे सोच रहा है वगैरह वगैरह, which is very interesting. Now, this can be also another product which somebody can make, which is that, for example, कोई um, online एक tool बना रहे हैं where you're taking an exam and you need to check कि कोई background में कोई बंदा आ तो नहीं रहा, कोई चीज़ बता तो नहीं रहा, या कोई mobile use नहीं हो रही या laptop use नहीं हो रहा, and then you can use this sort of like project similar to that. So yeah, you can see that the more things that we're adding, like visual language models, the more interesting projects we can now create with AI. So that's very fascinating. Okay, this is another. I think it's by Alibaba again. This is animate to anyone. So basically, आपको एक footage दें and एक image reference दे दें. So वो basically उसके ऊपर वो character map कर देगा पूरा का पूरा. So yeah, it's really interesting. That's cool. Yeah, Cool. yeah. And then you can always go to this project page over there. I think this would link to their. हाँ ये मैंने भी देखी थी. Yeah, and then they can tell you what it is, how the entire method is working. They're basically using an encoder, decoder, stuff like that. All right. Let's see, what more do I have on my table? So again, like there's a lot of stuff which is going on, and to keep up with this is a bit difficult. So we're doing you guys a favor by showing you guys all of this stuff. Okay, let's see. So I think I just have 4 things. Yeah. So there's also another project which people are working on, which is basically using OCR systems. And there's this guy called Tyler Moran. He was basically using LLMs, visual language models, to test on if it can read PDFs or not. And इसने basically बहुत सारे different visual language models पे test किया है. He did it for Omni AI, Azure Document Intelligence, AWS Tesseract, Google Document AI, Unstructured, GPT-4o Vision, Cloud, Sonnet 3.5, Llama 3.3 Vision, and DeepSeek R1. So for people who are trying to experiment with multimodal LLMs with using OCR, these guys can look into these technologies. Recently मैंने भी एक अपना project create किया था, thanks to Walid. He basically used Google's Gemini's API 2.0 Flash model to basically do OCR from receipts of supermarkets. And I took it one step further, where I was basically taking a list of different bank statements, scanned images of bank statements, and I was using Google Gemini's API to concatenate all of those bank statements. So this is also something interesting which you guys can experiment out and make like a small mini project. Okay, very quickly, I'll go over to the last 2 things, which is becoming an increasingly new powerful thing. It's a thing called OmniParser, which has been released by Microsoft. And what it does is it's basically like an agent tool, but it can control your computer. So for example, you give a task, buy milk. So are you basically यहाँ पे message डालते हो, buy me some milk on Instacart.
and then it just controls your entire browser, and then it buys the milk for you. ओके सो हम लोग इसे अपने इंटरव्यूज क्लियर करने के लिए भी यूज कर सकते हैं. Yes, technically, yeah. But I think the extra info which we have to give to this model is ke, write in like 45 words per minute speed, or like in a human way possible, because इतनी तेज तो कोई भी नहीं लिख सकता. Yeah, That's cool. yeah, So fan companies आ रहा हूँ मैं. yeah. And I think I don't know if it shows this. I think I have another video which shows that thing. Basically, इसमें भी अगर आप देखें ना तो there are a lot of technologies which were used to do this. So, for example, मेरे पास वो load नहीं हो रहा है. Man, but basically वो कर ये रहा था कि इस part पे video के, if I can pause it at the right moment. इस part पे how does he know where he wants to go? तो वो basically यहाँ पे एक object detection model लगा रहा था YOLO V8, I don't know कौन सा use कर रहा था. It was making these bounding boxes, and then it knew कि अच्छा ये Google Chrome है यहाँ पर, so फिर फौरन आपका जो mouse cursor है it went to Google Chrome. So creating Omni parser also has a lot of technologies from previous researches which is backing it up. So yeah, I mean, another lesson is that you should keep out for these things. You never know how something is being built and पीछे कौन कौन सी technologies पे use हो रही हैं. Um, yeah, so very very interesting. All right. I think this is going to end in 30 minutes. Yep. And we are in our infinite screen again on Meet. एक आखिरी चीज जो मैंने तुम्हें भेजी थी वो ऐड करनी आई गेस. All right. What was this again? Is it the AI for sentence prediction? या यही था, यही बोल सकते हो. But there's no link. नहीं है, अच्छा No. शायद नहीं होगा. बट या सो बेसिकली वो ये था कि तो इन्होंने क्या किया, एक एआई अगर मुझे मिलेगा तो मैं अगली पॉडकास्ट में शेयर कर दूंगा. तो दे ट्रेन एलएलएम मॉडल से ना, तो वो बेसिकली क्या करता है, वो आपका नेक्स्ट सेंटेंस जो आप टाइप कर रहे होगे लैपटॉप मोबाइल पे, तो वो प्रेडिक्ट कर सकता है कि भाई क्या ये टाइप करेगा. ठीक है ना, तो ये यस, तो वो उन्होंने बेसिकली दे यूज्ड, जैसे तुम्हारे वो सेंसर नहीं होता जो तुम अपने सर पे लगाते हो. ठीक है, तो समथिंग लाइक डैट था. से ना वो यूज़ कर रहे थे, और उसकी वजह से वो ब्रेन नर्व्स बेसिकली उसकी वजह से ब्रेन के आपके जो सिग्नल होते हैं उनको कैप्चर कर रहे थे. उसकी बेस पे प्रेडिक्ट कर रहे थे कि अब कौन सा वर्ड लिखेगा, कौन सा सेंटेंस लिखेगा. ठीक है ना, तो वो यस, तो वो ये चीज़ कर रहे थे. और भी चीज़ें थी बट मुझे इतना याद है उस वीडियो में. आई बिलीव हमारे यूनिवर्सिटी में एक FIP भी ऐसा ही हुआ था, एंड इनफैक्ट एक जूनियर ने मुझसे बोला भी था कि उसको भी कुछ ऐसा करना है. दे वर यूजिंग सम काइंड ऑफ डायोड्स और समथिंग जो कि ब्रेन में अटैच करेंगे एंड ब्रेन वेव्स से कुछ निकाल रहे थे. बट हाँ, सो बेसिकली वो कर ये रहे थे कि इंस्टेड ऑफ स्टोरिंग द पासवर्ड और यूजिंग योर फिंगरप्रिंट, वो कह रहे थे कि व्हाई नॉट सॉल्व अ मैथमेटिकल इक्वेशन इन योर ब्रेन एंड सेट दैट एज योर पासवर्ड. सो बेसिकली ब्रेन वेव्स जो होती हैं वो अल्फा बीटा गामा के अंदर होती हैं. सो उनको यूज करते हुए उन वेव्स को हम लोग एक्सट्रैक्ट करेंगे, एंड देन हम ये उससे पता लगाएंगे कि वो इक्वेशन कौन सी सॉल्व कर रहा है, एंड वेदर दैट इक्वेशन इज द सेम वन यूज्ड व्हेन सेविंग द पासवर्ड और नॉट. सो काफी काफी आगे की चीज थी, बट बट ये उनका मसला ये है आइडिया कि था. तुम एक ही प्रॉब्लम सॉल्व करते करते तुम्हें वो रट जाती है चीज़, तो फिर उस एग्जैक्टली पर फिर ब्रेन नहीं वेव्स जो करते हैं हैं. उनको, हाँ, उनको इंटरप्रेट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा. फिर कोई बंदा अगर गुस्से में है या कोई सैड है कोई हैप्पी है तो उस वक्त ब्रेन वेव्स अलग हो जाएंगी. सो ये अभी उनको प्रॉब्लम्स फेस आ रही है, बट दिस वाज समथिंग, उनका आइडिया बहुत कूल लगा मुझे. लाइक बहुत ज़्यादा सिक्योर हो सकता है, बट एट द सेम टाइम ब्रेन वेव्स इंटरप्रेट करना आई डोंट थिंक अभी पॉसिबल है ज़्यादा. नहीं, हाँ, तो तुम ये कर सकते हो, इंस्टेड ऑफ कि सेम प्रॉब्लम के तुम ये पैटर्न नोट कर लो कि रेयान कोई भी प्रॉब्लम इस तरह की आती है तो वो किस तरह सॉल्व करता है. तो ये तुम उस पैटर्न यस, को हाँ, मैच कर सकते हो कि भाई थ्रेशोल्ड पे बेस पे कि भाई हाँ ये. हाँ, दैट कुड बी पॉसिबल, दैट कुड बी पॉसिबल. सो So ये जूनियर्स के माइंड में चल रहा है. nice, nice.
I think I have just two things to end it off. There's this another thing. Basically, since आपके पास a million token context window है, there was this I think guy. Credits to whoever made this. Basically, you can add something called एक कोई चीज़ है add करता है पीछे called I think git ingest or something, and then you can like um, copy that, paste it over here, and even I forgot what it was doing. And then you can ask questions regarding your entire GitHub code. So instead of you uploading everything on ChatGPT and trying to ask it code कर क्या रहा है, you can just use this thing called git ingest. वो आप copy करोगे, यहाँ पे paste करोगे on Gemini API, and then you can understand the entire GitHub की repository, which is amazing. Cool. So जो भी हमारे पास open source models हैं like YOLO Yeah, अभी जिस दिखाया था yeah, so पूरा link दिया and then we can understand so yeah, इसके अंदर तो फिर GitHub contributions करना भी easy हो जाएंगे yeah, that's pretty cool. yeah. And one last thing to end this thing off is that you don't need to be a very good person. Like आपको एक अच्छा front end होना नहीं चाहिए आपके पास to create something very interesting. This is what Netflix's website looked like in 2007. It's like very basic. It's like Whoa. the Google like images I, from like 2000 or something. I thought ये PowerPoint है no Yeah, way. yeah. So what's interesting is what matters is what effective like movie recommendation system is working on behind. Like how good is it like recommending you stuff? And जरूरी नहीं कि आपके पास एक as a machine learner आपके पास एक अच्छा front end हो हमेशा. You can always create very amazing applications if your machine learning model is good and front end thoda sa okay show. So that's like a motivational tip that I want to give out, which is that if you have a not so looking good UI, it doesn't matter because maybe one day you can have like you can create like $1 billion company with it. All right, so that Nice. is all for the second episode of the podcast. Again, we'll do this again next week, hopefully, and we'll bring out more technologies. We'll share more information and insights on AI and machine learning. And yeah, if you like this content, do think about liking this video, subscribing to my channel for being up to date. And see you guys on the next one. Bye bye.